India is undergoing a remarkable transformation, evolving at an unprecedented pace. With a booming economy, rapid industrial growth and an ambitious clean energy mission, the demand for reliable energy storage and power solution products has never been greater. At the heart of this transformation is the need for precision-engineered power solutions that fuel industries and ensure seamless operations. And leading this energy revolution is one name, Prostarm. We specialize in delivering advanced energy storage and power conditioning equipment. With over 17 years of expertise, we design and assemble high-efficiency lithium-ion battery packs and critical power conditioning equipment, while our strategic partnerships ensure seamless integration of any customized power solutions. With 3 state-of-the-art manufacturing plants, dedicated research and development labs, and a strong nationwide presence, Prostarm delivers advanced power solutions with an intent to minimize downtime and maximize output. Our businesses is built on a foundation of technological excellence and customer-centric solutions. We ensure businesses never have to worry about power disruptions by delivering precision-engineered solutions tailored for various industries. Our businesses span critical sectors, delivering customized and high-performance power solutions. Our company is spread across multiple business segments and manufacturing capabilities, comprising of Sector 1, Core Manufacturing and Product Portfolio, UPS systems, inverters and lift inverter systems, solar hybrid inverters, lithium-ion battery packs, servo-controlled voltage stabilizers, isolation transformers, dynamic brake resistors, regenerative battery chargers and dischargers, underslung battery chargers. To summarize the above, we provide power backup and energy solutions for telecom, railways, engineering, aviation and more to ensure their seamless operations. Sector 2, Strategic Third-Party Collaborations. We provide high-quality batteries and end-of-life disposal for UPS systems through our trusted partners across India. Sector 3, Solar EPC Projects. We are constantly in the endeavor to design and install rooftop solar power plants across India to make renewable energy solutions cost-effective for businesses and households. Sector 4, Value-added services like installation, rental services, AMCs and warranty services to ensure long-term efficiency and operational uptime for customers. I firmly believe India is currently undergoing a phase of rapid industrialization and growth across all sectors. This in turn would drive growth in power electronic and energy storage space. With a strong market presence and a technology-driven approach, Prostarm is poised to ride this wave of energy transformation. What truly sets Prostarm apart is our commitment to quality, efficiency and long-term partnerships. At Prostarm, our manufacturing units and processes are accredited with globally recognized certifications, ensuring compliance with the highest industry benchmarks. We excel through efficient manufacturing, innovative technology and tireless dedication to our customers. Over 40% of our customers hail from healthcare, BFSI, railways, defense, security, education, renewable energy and information technology, and have been associated with us. Additionally, with the Indian government's increased focus on renewable energy and battery energy storage systems playing a pivotal role in this transition, Prostarm is positioned for exponential growth. Prostarm believes that our people are our greatest strength. As an employee-first organization,
We are committed to creating a workplace that values and supports our workforce at every step. We provide comprehensive medical coverage for employees and their families, ensuring their well-being. In addition, our ESOP program reflects our commitment to shared success, empowering our employees to be stakeholders in our growth journey. Today, along with 411 dedicated personnel and a robust IT infrastructure, we are ready to redefine the future of energy. As we continue to expand and innovate, Prostarm is here to deepen our roots and presence across the Indian market and are also setting our sights to a global stage. Our focus remains on scaling our manufacturing capabilities, enhancing technological advancements, and driving operational efficiency to ensure we continue to make a difference in the power solutions sector. And at Prostarm, we are not just keeping up with change, we are driving it. Invest in engineering tomorrow's progress. Invest in Prostarm. Welcome friends, my name is Avinash and I welcome all of you to another interesting episode of Corporate Face-to-Face series. Friends, as all of you are aware, we introduce emerging companies from emerging sectors in these episodes, and we make it a point to talk to the companies, promoters, their top managements, and in this process we get a lot of valuable information about their company's business model, their growth journey, their future growth plans. And in this process, all our investors benefit immensely. And today, friends, we've got another interesting company which is going to hit the capital market very soon. We have a company called Prostarm Info Systems Limited. And I have the privilege of having both the promoters and the top management team with us. I have Mr. Ram Agarwal, who's the promoter, CEO and whole-time director. Ramji, बहुत बहुत धन्यवाद. It's a pleasure for me to host you. And we also have Mr. Abhishek. Pleasure for me too. Yeah. We have also Mr. Abhishek Jain, who's the CFO of the company. So, Abhishek ji, आपको भी धन्यवाद. Thank you, sir. Time, let us start the interview. Ramji, first question, which is very elementary. If you could explain to us, what is the company's business model about, what are the products we make, and what is the positioning of our company? And, a small related question to this. Ramji, how did this business journey start? Was it a first generation effort from your side? And how did you hit upon this idea of starting this business? So if you could please share your thoughts. Avinash, let me start with my own journey. 2002, I started my career. Calcutta में पैदा हुआ हूँ, born and brought up in Calcutta. Calcutta से पुणे में shift किया हूँ 2002 under employment with other company in same electronics industry only. 2002 से 2008 तक मैंने वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखा, इंडस्ट्री को जाना, मार्केट के बारे में जाना मैंने, एंड देन कुछ करने की चाहत थी तो मैंने वहाँ से अपने खुद की काम करने की स्टार्ट की मैंने. तो 2008 I started this company. You will not believe, initially we started with a 500 square feet and with 3 employees only. And from there, today we are having 50,000 square feet factory in Pune and with 400 plus manpower on payroll across India. So again, coming back to my starting journey, 2008 जब मैंने company start की, where we are focusing largely on UPS system only. In that period, UPS was meant only for the IT segment, mainly for computer use only. So that time we were largely focused on banks, ATM, BFSI sectors. बहुत सारे हमने अच्छे कॉन्ट्रैक्ट लिए, इंस्टॉलेशन बेस किए. बाय वर्च्यू ऑफ दिस ऑल इंडिया पैन इंडिया हमने नेटवर्क क्रिएट किया, इंफ्रा क्रिएट किया हमने. वर्चुअली वी हैव ऑफिसेज ऑल अक्रॉस इंडिया. आवर कोर प्रोडक्ट स्टार्टेड विद यूपीएस, बट टुडे it is UPS, servo stabilizer, isolation transformer, hybrid solar inverter, lithium battery, and next is energy storage. So again, coming back to our 2008 journey, starting journey, वहाँ से हमने journey start किया from Pune, a small factory, and then in 2012, after struggling a lot in India market and in Pune market, we thought of going further. So I shifted to Mumbai in 2012.
with the hope, with the intention कि कुछ बड़ा करना है. And in last few years, we have open our offices across India in every state capital. We have 240 locations, service field service engineer. In 2019, after working so long in BFSI sector, कुछ अप्स एंड डाउन भी आए हमारे करियर में. वहाँ से हमें कुछ एक लर्निंग मिली कि नहीं, हमें एक ज्योग्राफी, एक सेक्टर, एक प्रोडक्ट पे हमें डिपेंड नहीं करना चाहिए. सो वी हैव स्टार्टेड डाइवर्सिफाइंग इन द न्यू सेगमेंट. और जब हमने स्टार्ट की, कोरोना आ गई. वी सेट इन होम. घर में बैठने के बाद हमें फील हुआ कि नहीं, चाइना से बाहर हमें कुछ करनी चाहिए. तो इन 2021 हमने एक जेवी कंपनी फॉर्म की पुणे में. हमने एक लोकल एक पुणे बेस्ड कंपनी से जेवी किया, जिनके पास यूपीएस की टेक्नोलॉजी थी, और हमने फुल फ्लेज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट किए पुणे में. Because of that venture, because of that acquisition, today we are able to produce, supply UPS to defense, railway, telecom, metro, airport, healthcare, और भी कई सेंसिटिव लोकेशंस में सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस के लिए. सो गोइंग फॉरवर्ड 2022 से लेकर 2025 तक वी हैव स्टार्टेड अ लिथियम प्लांट आल्सो. In Okay. Bombay, we have started a 100 megawatt hour plant, and from there we are venturing, looking forward a big journey in lithium and then energy storage. Then I think very nicely explained by you, Ramji. Now, Ramji, I understand. I've read the prospectus and presentation. Sir, हमारे पास तीन segment है. Basically, we have got the power solution products, third party solution products, or EPC business or value added services. Ramji, just explain to me that in your own perspective, which is the fastest growing segment and कौन से segment पे हमारा सबसे ज्यादा focus रहेगा, सबसे ज्यादा growth कहाँ से आएगा? See, Avinash ji, this whole what four segment you are talking ना, ये चारों सेगमेंट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है. ऐसा नहीं है कि हम एक ए में बेसी बढ़ेंगे, बी में कम रहेंगे, ठीक है. ऐसी कोई डिमार्केशन नहीं है. ठीक है. बट गोइंग फॉरवर्ड, दिस ऑल आर वैल्यू एडेड सॉल्यूशन इन पावर सेक्टर. ओके. तो सारे सेक्टर ही ग्रोथ होगी और हमें फोकस एरिया रहेगी. ओके, ठीक. और सर अभी एक बात बताइए राम जी, इस बंदे में इन दिस बिजनेस सर, इज इट अ ऑर्डर बुक बिजनेस और इज इट अ रोलिंग काइंड ऑफ बिजनेस की कस्टमर आपको रिक्वायरमेंट देता है, रेगुलर कस्टमर है तो वो रेगुलरली अपने फ्लो के हिसाब से ऑर्डर्स अनाउंस करता है. तो हाउ डज द बिजनेस वर्क लाइक टिपिकली फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, इफ यू कुड प्लीज एक्सप्लेन. इट्स अ मिक्स बैग. हमारे पास कई बिजनेस ऐसी है जो रोल ओवर हर मंथ ऑन मंथ आने ही वाली है, बिलिंग होती ही है ऑन एन एवरेज. रेट कॉन्ट्रैक्ट है. और कई हमारे टेंडर बिजनेस है, प्रोजेक्ट बिजनेस है, वेयर इट्स अ अपॉर्चुनिटी बेस्ड. So it's a mixed type of business with us. Okay. But Ramji, Just to add here further, Yeah, Avinash ji, yeah. इसमें we also have a very strong distributor network. तो करीब 400 plus distributors है अपने pan All India across में. India. Okay. So that also is a one more important mix which helps us to give a regular category business. Okay, understood. So basically it's both tender based as well as you got your own distributor kind of network. Okay, now Ramji, one thing I wanted to understand, typically for private or tender based business, initially जब inquiry आती है customer की, तो sir, on what parameters do they evaluate you? Like, do they look at your existing track record, your product quality, उसका execution कैसे है? और नॉर्मली कितना टाइम लगता है फ्रॉम द ऑर्डर टिल एग्जीक्यूशन? यानी मान के चले किसी ने आपको 100 करोड़ का ऑर्डर दिया, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सर नॉर्मली व्हाट इज द स्पीड टू मार्केट, इफ यू कुड प्लीज एक्सप्लेन. See, there are two things. There are two type of business approach. One is where we have to be L1, it's open game, we have to go cutthroat price. And second is the quality based business, niche market, where entry barrier is there. So we are largely focused on the market where we don't compete with the local Indian company. Okay. We compete only with the global MNC, where entry barrier is there. Okay. So we are getting opportunity based on product, company credentials, and experience. Okay. It is not easy entry for local Indian company. First, second, whatever order we get, suppose आपने कहा 100 करोड़ की order, तो they all comes with a schedule. With say 90 days, 120 days में हमें complete करनी है, and every 30 days we moves on cycle.
25% on each cycle we complete the order value. सर इसमें और ऐड करता हूँ अविनाश जी, लाइक इफ यू सी, आप पावर इलेक्ट्रॉनिक के अंदर में ओनली प्रोडक्ट सप्लाई एक इम्पॉर्टेंट एरिया नहीं होता सर, सर्विस बिकम्स इक्वली वेरी वेरी क्रिटिकल। तो प्रोस्टर जब मैं टेंडर गवर्नमेंट बिजनेस भी करता हूँ ना, तो उसमें उनकी हमेशा एक आस्क रहती है कि आपकी प्रेजेंस किधर है। तो जो राम जी ने आपको पहले आंसर दिया था, दैट वी आर प्रेजेंट, वी हैव 240 इंजीनियर्स हु आर पेशेंट अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस, प्लस वी हैव 21 ब्रांचेस स्प्रेड अक्रॉस इंडिया, एनी कैपिटल स्टेट व्हाट यू नेम। Okay. Okay. इससे भी एक और माइलेज मिलता है जो मेरे क्रेडेंशियल को वैल्यू ऐड करता है इन टर्म्स ऑफ माय capacity to fulfill the customer's requirement. Okay. Okay. No, I think very nicely said. So that it means that you all have a fairly good pan India kind of coverage. Servicing, I think the client is also very important, which the company does. Now tell me one thing, sir. थोड़ा competitive landscape के बारे में तो आपने बोला कि you all cater to the customers which want high-end requirements and don't compete with the local kind of competitors. Tell me one thing, sir. If we keep the financials away for some time, सर इन क्वालिटेटिव टर्म्स राम जी हमको रिपीट बिजनेस कितना मिलता है, और सेकंडली सर हमारा वैल्यू एड क्या होता है कस्टमर को जब हम कस्टमर को सर्विस देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं। जैसे अभिषेक जी ने बोला कि इतने सारे इंजीनियर्स है, पैन इंडिया है, तो सर हमारा यूएसपी क्या है कि व्हाई डज द कस्टमर कम टू अस रेगुलरली एंड व्हाट आर द वैल्यू एड्स वी ऐड टू द कस्टमर? इफ यू कैन शेयर 2-3 क्वालिटेटिव पॉइंट्स फॉर अस। See, one is the qualification. Like मैं एक सेक्टर बात करता हूँ एग्जांपल के लिए, ऑयल एंड गैस। अब ऑयल एंड गैस में ईयरली 200 से 300 करोड़ की यूपीएस लगती है, बट सप्लायर्स आर लिमिटेड, एंट्री बैरियर इज देयर। सो इवन दो हम एक छोटी से हमने पोर्शन हमने एग्जीक्यूट किया, बट नाउ वी हैव गॉट द क्रेडेंशियल क्वालिफिकेशन टू कैटर ऑल एग्रेसिवली इन दिस सेक्टर. So first is the qualification, then is the last mile reach and the continuity. This is the main USP for us. We can say which will help us to grow sector by sector. Sir, and 40% of our business in FY24 is from repeat customers. Okay. Okay. Fine. Which is fairly a good number. Yeah, yeah. No, it's definitely a good number. That shows what is the credibility the company enjoys. That is very clear. Yeah. Now, Abhishek ji, one question on the financials which I want to ask you is that we have done very well for FY24. We had a profit of 23 crores from 19 crores. Top line भी मेरे ख्याल से अच्छा बढ़ा है. I was seeing, sir, for the first 9 months also, that momentum has been more or less, in fact, it has been maintained much better. Sir, if you could just tell us briefly what was the key reason for this improvement in profitability, because numbers have improved quite well. So anything specific? Did we deliver more orders, or did we get a better kind of price realizations? Margins में improvement हो गया. So sir, if you could tell us what are the key reasons for this improvement in your own words? Sir, इसमें what Prostarm is focusing primarily, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं देना. वी हैव टू ऑलवेज बी ऑन द इनोवेटिव फीट. मुझे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देना है. सो लाइक लिथियम व्हाट वी एडेड. सो लिथियम एनर्जी स्टोरेज में एक ट्रेडिशनल एसएमएफ बैटरी जाता ही है. अब मैं उसको अपने ही बैटरी स्टोरेज के साथ यूपीएस देता हूँ, तो इट वर्क्स एज अ सॉल्यूशन. प्लस यूपीएस में भी कई कस्टमाइजेशंस जो बिकॉज ऑफ द फैक्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर and strong R&D that we have, we were into a segment where we are able to do such high-end customization for the customer fitment. ये factors is resulting us into a better margin and a better customer profile and a niche segment. जैसे कि मेट्रो जो राम जी ने कहा, it is all deliverable and outcome of such capability of company, and then our edge of competing with the MNC player. सो एमएनसी प्लेयर कॉम्पीट करने से आप एक बेटर ऑफ पोजीशन में आ जाते हो इन टर्म्स ऑफ द मार्जिन्स. सो दीज फैक्टर्स हैव रिजल्टेड अस इनटू अ बेटर रेवेन्यू एज वेल एज बेटर मार्जिन and higher efficiency. Right. Yeah. Abhishek ji, now one more question on the current year. Although March has got ended, now we are in the month of May. Without giving me a number, Abhishek ji, because we follow compliance very strictly, so I don't want a number from you. But sir, qualitatively, अगर आप demand outlook बताओ कि what is the outlook for current year? Like, can we say that what we have achieved in FY25 can hopefully be sustained in FY26 also? सर गाइडलाइन से गवर्नड हूँ. इसको आंसर ऐसे प्लेस करता हूँ सर कि इंडस्ट्री वाइज इफ यू लुक एट इंडिया एज अ होल,
So the power के अंदर में ask is extremely high. It started from IT segment as the starting. Now you take anything, any product under the roof. चाहे आप हेल्थ केयर सेगमेंट में जाओ, आप रेलवेज में जाइए, चाहे डिफेंस में जाइए, सर्विलेंस में जाइए, आपको लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना है, पूरे के पूरे आपको सीसीटीवी मतलब क्राइम रिकॉर्ड्स या पुलिस थाने को कंट्रोल करना है. एवरीथिंग इज नाउ यू नीड टू हैव अ डेरिवेटिव इन द फॉर्म ऑफ यूपीएस या स्टेबलाइजर या सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर. प्लस द एनर्जी स्टोरेज स्पेस में जो बिग जो jump which is coming up in coming time. So all this factor and the company's capability to fulfill all this requirement speaks about what is expected going forward. No, I think इसको that मैं is, थोड़ा yeah. इस तरह से बोल पा रहा हूँ. Then I think very nicely put out by you, which gives us an indication of how the future looks. Abhishek ji, just one related question again, without giving me a number. Tell me, sir, हमारे जो existing EBITDA margins है, can we assume that ये EBITDA margins तो हम comfortably maintain करेंगे? At least that if you can share for us. Sir, it seems so. हाँ, We should deliver it. It seems like that. okay. Rest we are governed. हाँ, But जिस तरह की अपनी capability और जो मुझे दिख रहा है, हाँ, I'm assuming and जिस platform पे company और जो growth plan लेकर आ रहा हाँ, है. हाँ, So I assume we should, ठीक which है. is my belief. Yeah, Yeah. no problem. Acha, now Ramji, one very relevant question. First is, please explain to us, what is the market opportunity for us in the next, say, 3 to 5 years? Because as Abhishek ji said, there is a huge demand for UPS and typically all related power products. But typically, how much of that market can we capitalize by putting out a proper strategy going forward? And any new products we are experimenting or are there in the R&D kind of stage? If you could, please share your thoughts. See, we started with UPS with only a computer as an application in 2008. From there आज 15-16 सालों में हम आज कोई भी सेक्टर को हम कैटर कर सकते हैं. बाय वर्च्यू ऑफ दिस आने वाले 3 से 5 सालों में कोई भी सेगमेंट में कुछ भी डेवलपमेंट आए, ग्रोथ आए, मैं आपको बोलता हूँ नॉन रिलेवेंट एक हर घर जल योजना आई है गवर्नमेंट की, एक आईटी प्रोजेक्ट आ रही है, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट आ रही है, राशन कार्ड प्रोजेक्ट आ रही है. इन सब में पावर इज मस्ट, एंड जहाँ पावर इज मस्ट वी आर वेरी वेल पोजिशन देयर. हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी इनोवेशन, हमारी प्रेजेंस, लास्ट माइल रीच विल गिव अस मोर एज ऑन आवर कंपटीशन. Okay. हम टायर 2 कैटेगरी में हैं इंडिया में. वी आई कैन से दैट वी आर द ऑर्गेनाइज प्लेयर इन द अनऑर्गेनाइज सेगमेंट ऑफ टायर 2. Tier 2 is a semi organized, I can say, and Tier 1 is a global MNC. Okay. So in Tier 2 we are the number one, and we are very well competing with the Tier 1 global MNC in any and every sector. अविनाश जी, just to give you glimpse कि आज इंडस्ट्री में एक expectation क्या है. UPS industry is currently roughly around 9,600 crore. It's expected to be at something around 14,000 plus crore by 30. Solar hybrid inverter is currently roughly 524 crore. It is expected to be 1400 crore by 30. However, अभी जो एनर्जी स्टोरेज जो नए गवर्नमेंट के नियम आए हैं रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में कि 10% का एडिशनल स्टोरेज आपको लगाना पड़ेगा अपने हर प्रेमाइसेस पे, ये इसमें फैक्टर्ड नहीं है. Okay. Your lithium ion solution, that is 55,000 crore का मार्केट है जो एक्सपेक्टेड टू ब्लास्ट, मतलब 20% CAGR से ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, विच वुड बी अराउंड 1,63,000 ऑट करोड़. एंड आप बेस की ही बात करोगे तो बेस जो आज 0.11 गीगावाट का है इन 24, ये 47 गीगावाट का हो जाएगा बाय 2031. So you can imagine the market which is there and where the Prostarm number is. Yeah, It is Long so way to small go. and much bigger market to chew. exactly. And हमारे पास सब product available है बिल्कुल. and That, credential available है that to get into that higher scale market. that is fine. I think nicely explained by you, Abhishek ji. राम जी, अभी मेरे को बताइए, अभी नहीं बट आगे चल के अगर आपको कोई इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी मिल गई, अच्छी कंपनी जैसे आपने बोला कि साथ आप काम करो या एक्वायर करो, तो इज द मैनेजमेंट ओपन फॉर दैट, फॉर इंक्रीजिंग योर बेसिकली योर बिजनेस प्रेजेंस अक्रॉस न्यू कैटेगरीज? क्योंकि सर ये भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर होता है कंपनीज में
तो इसके लिए भी आप ओपन हो? आई मीन मे बी इट मे नॉट हैपन इमीडिएटली, बट मे बी अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ गई तो विल यू थिंक अबाउट इट पॉजिटिवली सर? सी अविनाश जी, हमारी कंपनी के प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है फॉर एक्विजिशन। हमने पास्ट में दो दो एक्विजिशन की हुई है। एंड हमारे लैंग्वेज में एक्विजिशन इज नॉट एक्वायरिंग कंपनी, वी आर फोकस्ड ऑन एक्वायरिंग द टेक्नोलॉजी, हाँ, समथिंग इनोवेटिव which will give us the further upper edge in the market. ओके, Yes, we are very much open to acquire technology then company. ठीक है, समझ। अच्छा राम जी, अब ये जब आपने टेक्नोलॉजी की बात की है तो मुझे बताइए, सारे प्रोडक्ट जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं सर, यहाँ पे आर दी ऑल मेड बाय अस इंडिजिनसली, या इसमें थोड़ा बहुत एक ज्यादातर बड़ा इंपोर्ट कंटेंट भी होता है? इफ यू कैन एक्सप्लेन टू अस इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, मींस एवरीथिंग इज। Whatever manufacturing we are doing in Pune is 100% indigenous. बट रॉ मटेरियल जैसा मैं बोल रहा हूँ, अब लाइक आप माइक्रो कंट्रोल ले लो, आप मैग्नेटिक्स ले लो, स्विच गियर्स ले लो, हाँ, हम प्रोक्योर लोकल करते हैं। दे मे बी ओरिजिनेट फ्रॉम चाइना मे बी, हाँ, बट फॉर अस इट्स अ कंप्लीट 100% इंडिजीनियस। ओके, ठीक, समझ गया। तो बेसिकली इट इज Total 100। import percentage is only roughly around 6% 7%। ओके, for till December ओके, 24. yeah. No, I think understood. So basically, it's fully more or less almost you can say a majorly part of it is all made in India. So which obviously gets the government's support also, because of the Make in India kind of policy. Ramji and Abhishek ji, now most important question of today's interview, sir. We are going public, and investors are also going to share your growth journey with you. So if you could tell us, sir, what is the size of the capital market offering and what is the money going to be used for? If you could please tell us these details, please. Right, sir. So total IPO size is 168 crore. This 168 crore mein we are asking for 80 crores towards working capital utilization, term loan repayment of 4 crore. There is a WCDL which we are paying off, which is 14 crore. Okay. And general corporate purpose is 53.5 crore, which is majorly for some strategic acquisition, inorganic growth that we are eyeing. Oh, oh. Yeah. And Abhishek ji, just wanted to understand that basically when you say capex, what is the impact of this capex going to be? Will this capex be functional in 26? I mean, will we be able to see some revenue coming in from the new, investment what you're going to make? सर अभी कंपनी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में है, सो आफ्टर दैट, सो करंट फाइनेंशियल ईयर में इसका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, एंड इट वुड बी मोर इम्पैक्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड. Okay, understood. Fine. Now, Abhishek ji, another finance-related question. Since you said working capital, normally tell me, sir, what is the normal working capital cycle in our business? Like right from the time you get the order, you execute it, the customer pays you. Typically, what is the inventory kind of time which you have to invest, and what is the receivable time? So, if you could tell us in the these details. Right. So if you take the cash conversion cycle to sum Ah, up, the yeah. cash conversion cycle in FY24 was 96 days. In till December 24, it is similar at 96 days. Okay. However, in FY26, we are expecting some increase in the working capital cycle, Okay. owing to two major factors. Okay. One being that our increased production would result into more storage of the raw material. One part, basically primarily towards the lithium side. Okay. And second is, we are increasing our bandwidth on the government segment business. Okay. So that governments, because the growth which is happening in healthcare, defense, aviation, railway, anything you take. So all the or the smart digitization. So all these are majorly government projects. So Okay. result of that would be impacting my data cycle to some extent, which would increase from 98 days. We are expecting it to be something around 105 days in Okay. FY26. Okay. No, fine. Understood. Ramji, now in our earlier conversation, you mentioned that we are in a category where competition is less. We cater to large, MNC customers also. Ramji, मुझे बताइए कि मोटा मोटी हमारे without naming the customers, अगर आप बताइए कि सर हमारा customer base अभी कितना बड़ा है? And typically, as Abhishek ji was saying, around 30-40% comes from repeat business. Sir, how many new customers have we added in the last couple of years? नए customers कुछ हमने add किए? हम Right, sir. Yeah. फोर्टी Please. परसेंट अभिषेक टोल्ड कि 40% इज आवर रिपीटेड कस्टमर, तो इट मीन 60% आवर न्यू कस्टमर ओनली। ठीक है. एंड इफ अगर हम ये पता है आपको कि हमने एड ऑन कितने किए हमने,
So number of customer add-on is very high, but our main focus is instead of quantity, we are focused on the quality. Like we have added one defense customer, DRDO. हाँ, So I'll not take further name, but this one customer is a gateway entry to the whole defense sector. बिल्कुल समझ गया। नहीं So we राम have taken और one एक airport जो order. हाँ राम जी और एक बात जो मुझे पूछनी है कि सर नॉर्मली हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इज इट अ ईयरली कॉन्ट्रैक्ट और इज इट अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कि कम से कम It's वो a it's आपको a it's a विजिबिलिटी देती है? mix. It's a mix. It's a one time, long contract, rate contract, everything. ओके, It's a mix contract. अच्छा, इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। ओके, पर अविनाश Yes. जी एक ब्यूटी क्या है इसमें, ये जनरली पावर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है ना, लास्ट माइल प्रोडक्ट है। हाँ इट इज नॉट लाइक अ रोड प्रोजेक्ट्स ये सब जो लंबा चलता रहेगा। हाँ बिल्कुल। तो एग्जीक्यूशन स्पीड इज वेरी हाई, ओके वेरी फास्ट। ओके या ओके। And secondly, post deployment, AMC replacement. This is also a recurring business for us. नहीं नहीं, दैट इज व्हाट आई वाज कमिंग टू राम जी कि नॉर्मली हमारा जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है वो जरा बताइए सर, कितने सालों में यूपीएस को रिप्लेस करना पड़ता है या उसका मेंटेनेंस है, सर उसके बारे में बताइए। Post warranty maintenance compulsory. Life in some sector they go with the life. In some sector they go with the warranty. ओके Warranty over, they just replace the product because ओके of the sensitivity of the product. ओके So in whatever case, we get the recurring business for sure. ओके, फाइन, समझ गया। लास्ट क्वेश्चन नाउ राम जी, वी हैव सीन कोविड एंड नाउ नॉर्मलसी टचवुड हैज कम बैक, द इकोनॉमी इज आल्सो ग्रोइंग वेरी वेल। टेल मी वन थिंग सर, हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क क्या है एज अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी एंड अभिषेक जी एज सीएफओ, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल व्हिच यू ऑलवेज वांट टू कीप अंडर कंट्रोल सो दैट एवरीथिंग रन्स स्मूथली? इज इट प्रोडक्ट क्वालिटी, इज इट एग्जीक्यूशन, या कई रॉ मटेरियल का प्राइसेस बढ़ गए, तो सर ऐसा क्या वेरिएबल है जो आप ऑलवेज कंट्रोल में रखना चाहते हो और टिल नाउ यू हैव ऑप्टिमली मैनेज्ड इट, सो इफ यू कुड शेयर योर थॉट्स। See, ours is not a consumable product. Ours is a technical product. So to be honest, production is not a challenge. Raw material supply chain is not a challenge. But yes, technology upgradation time to time and the post deployment service maintenance. हाँ, These two are the challenges, and I can say it's our expertise area also. Challenges of our sector, expertise of our company, I can say. okay. So basically you mean, please correct me if I'm wrong, you mean the runway for growth is very large. I mean, only thing is basically, demand from user segments has to grow, and I mean, आप एक अच्छा वेरिएबल प्रोडक्ट सप्लाई करते हो तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है ग्रोथ अचीव करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है। तो यही यही अविनाश जी, इफ यू टेक एज अ, आज एक अच्छी कंपनी को बनाने और बढ़ाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या रहता है सर? एक स्टेट और आपके पास अच्छी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग R&D कैपेबिलिटी होनी चाहिए, पैन इंडिया प्रेजेंस होना चाहिए ताकि आप सप्लाई कर सको और सर्विस कर सको, आपके पास प्रोफेशनल टीम होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट का बास्केट होना चाहिए, कुछ स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एंड टेल विंड जो इंडस्ट्री के अंदर में जो ऑलरेडी ग्रोथ है। तो ये सारे फैक्टर्स इफ यू मिक्स जो अपने डिस्कशन किए सर, ये सारे फैक्टर्स ऑलरेडी प्रोस्टर एम बिल्ड करके चल रहा है। बिल्कुल। Well, I think very nicely explained by Ramji, you and Abhishek ji. So it was my pleasure to host you, and all our investors will also benefit immensely. Sir, please accept my best wishes to you, your entire management team, and sir, public issue के लिए भी बहुत बहुत best wishes and best wishes for future performance also. Thank you very much. राइट राइट राइट, थैंक यू सो मच Thank सर, you. थैंक यू, थैंक यू।